Hello people and welcome to Shifting Gears, and in today's video we have with us the all new 2020 Hyundai i20. अब इसके पहले भी हमने इस i20 के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं. As the first look, this is our proper in-depth review of this new premium hatchback. अब ये Hyundai i20 का थर्ड जनरेशन मॉडल है here in the Indian market. The premium hatchback segment for Hyundai started with the Getz back in 2004. Then came the first generation i20 in 2008. In 2014, Hyundai ने लॉन्च की उनकी नई Elite i20, and this is their latest offering to the premium hatchback segment. This is the third generation of the i20, और इस गाड़ी की कीमत जो है वो शुरू होती है फ्रॉम रुपीज 6.8 लाख रुपीज एक्स शोरूम और जाती है ऑल द वे अप टू 11.18 लाख रुपीज एक्स शोरूम. काफी लोगों का ये कहना है कि ये जो नई Hyundai i20 है ये महंगी हो चुकी है एंड इट इज एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू इट्स ओन प्रीवियस जनरेशन मॉडल एज वेल एंड ऑल्सो कंपेयर्ड टू कॉम्पिटिशन. लेकिन ये नया मॉडल जो है इट इज बिगर, सो इट इज ऑफरिंग यू मोर रूम इवन ऑन द इनसाइड. इट हैज मोर रियल एस्टेट ओवरऑल एज वेल एंड इट हैज अ लॉट ऑफ न्यू फीचर्स. काफी सारे सेगमेंट फर्स्ट और सेगमेंट बेस्ट फीचर्स आपको मिल रहे हैं इन द कैबिन ऑफ दिस ऑल न्यू i20. तो ये जो इंटीरियर रिव्यू है, ये जो वीडियो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लेट्स फर्स्ट start with the space that is on offer inside the cabin of this 5-seater premium hatchback from the house of Hyundai. So check it out. It is not a tall boy hatchback. It is a typical premium hatch and you sit down in the cabin of this car. It is not something that you will easily just step inside. You will have to, make that conscious step and then get inside, step down in the cabin of this i20. Now check this out. I'm going to adjust the seat to my height. I'm 5 feet 8 inches in height, and overall the driver feel is pretty fantastic. Steering wheel पे आपको tilt and telescopic function मिल जाता है, and the seat right now is at the lowest height, and I have a very good view as the driver's POV. And also you will notice that there is ample headroom available for me as well. I'm going to pop open the sunroof to allow some extra light, and just check out the seats. Seats are also quite comfortable. You get leather upholstery on the top trims, तो ये आपको मेंटेन करने के लिए भी आसान होने वाला है. And overall, you have a dark theme inside the cabin of this all-new i20, but still it looks nice and sporty, and I think it adds a nice appearance to this segment. It is a breath of fresh air, the new design layout inside the cabin of this new i20. एक और चीज जो आपने नोटिस करनी है, इसके पहले जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे वहां पे आप रेड कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स देख पा रहे थे ऑन क्वाइट अ फ्यू panels and on the upholstery as well. Here you don't get that. The red accents are only on the dual tone variants of this new i20. But this is the amount of space that is on offer in the front. Let me jump in the back seat. The front passenger seat I'm going to push all the way forward, and behind my own driving seat position in the back seat, check this out. This is very generous leg room. So this is quite comfortable. Footroom भी काफी अच्छा है. ये सीट at the lowest height होने के बावजूद भी मुझे मेरे पैर यहाँ पे मूव करने में काफी आसानी हो रही है. There is really good thigh support over here at the back of this Hyundai i20. The back seat bench is very generous and this is going to be good for those long drives. यहाँ पे आपको एक adjustable headrest भी दिया गया है. And check this out. This is the amount of headroom that is available. To keep you happy, at the back inside the cabin of this new i20 आपको AC vents मिल जाते हैं. You have 2 AC vents. You have a smartphone storage point. You have fast charging USB socket over here, a USB point over here. Also notice this. यहाँ पे आपको सीट बैक पॉकेट नहीं मिलता है behind the driver seat, लेकिन फ्रंट पैसेंजर सीट के पीछे आपको वो जरूर मिल रहा है. And you also have this armrest over here for your comfort and convenience, but no cup holders. And there are only 2 adjustable headrests. There is no headrest for the third passenger. When I close the door, just check out the window section. It is generous. It is allowing decent amount of light inside the cabin. और यहाँ पे आपको एक quarter glass भी मिल रहा है. So there is that extra light that is going to come inside the cabin. So you will feel light and airy. आपको ज़्यादा claustrophobic feel नहीं होगा. Even though there is dark theme primarily inside the cabin of this i20. If I have to sit here as the 5th passenger, check this out. Transmission हम जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, but it is noticeable for sure.
आप या तो अपने पैर इस तरीके से पोजीशन कर सकते हो, बट देन यू आर गोइंग टू हैव योर नीज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, अदरवाइज यू विल हैव टू मेंटेन दिस गैप बिटवीन योर लेग्स, एंड देन दिस इज द अमाउंट ऑफ हेडरूम दैट यू विल गेट एज द फिफ्थ पैसेंजर, एंड नो headrest, so no support and no safety to protect you from whiplash injury. Now this front passenger seat मैंने इसे all the way forward push कर रखा है, and if I want to make use of this car for my chauffeur driven requirements, check this out, यहाँ पे काफी अच्छा leg room मिलने वाला है आपको. You have very generous foot room as well, so even if you are a tall passenger you will be happy over here. आप cross legged भी यहाँ पे बैठ पाओगे, and the i20 will keep you happy in the back seat. एंड यू नोटिस कि आपको आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन पीछे के ऑक्यूपेंट्स के लिए आपको डोर ट्रिम पे एक बॉटल होल्डर जरूर मिल रही है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कन्वीनियंट टू स्टोर योर फेवरेट बेवरेजेस. नाउ दैट्स अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ स्पेस फॉर द पैसेंजर्स, बट व्हाट अबाउट लगेज? ये जो Hyundai की i20 है, इट इज गोइंग टू इजीली अकोमोडेट योर रोड ट्रिप लगेज. कम अप क्लोज एंड यू कैन नोटिस दिस. वी हैव 2 suitcases, we have 2 backpacks, and there is still more room to accommodate more luggage. तो 4 या 5 लोगों का 4 या 5 दिनों का सामान आप यहाँ पे काफी आसानी से कैरी कर पाओगे. ये पार्सल ट्रे जो है, अगर आप इसे हटा देते हो, you will be able to store even more luggage if you have taller bags. And I don't think you will consider this boot space as insufficient. I think this is very very generous as per hatchback standards. बूट में आप एक और चीज देख लीजिए, आपको एक सबवूफर भी मिल रहा है. The new Hyundai i20 comes with a 7-speaker Bose premium sound system, and this also sounds bloody good. एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए. To close the boot, you have this grabbing point over here. This is the request sensor that you have to press when you want to open the boot, and the parcel tray is attached to these strings and it moves with the tailgate. So that is also a convenient thing. And when you close the tailgate of this i20, वो request sensor यहाँ पे position किया गया है. You can notice that from the carved out section of this bumper of this all new generation Hyundai i20. But now let's talk about the front cabin, and let's talk about all the features that you're getting and all the quality which really shouts out that this is a premium hatchback. Now when I step inside the cabin, primarily the first thing that I will notice is this new steering wheel. यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको लेदर रैप दिया गया है. You have contrast stitching, you have these silver accents, और ये जो D-cut steering wheel है, it is similar to what you have seen in the Hyundai Creta as well. आपको thumb contours भी मिल जाते हैं, and it feels nice and chunky. It feels quite good to your touch. Horn pad is also nicely positioned. Check this out. It is very easy to operate. ऐसा नहीं है कि आप एक थंब का इस्तेमाल करके इसे प्रेस नहीं कर पाओगे. The buttons on the steering wheel are also very nicely positioned. काफी बड़े बटन्स हैं, इस्तेमाल करने में भी काफी आसान है. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो बटन्स दिए गए हैं, these are for your infotainment. राइट हैंड साइड पे जो कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, these are for your MID, और आप यहाँ से क्रूज कंट्रोल जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो. Then when you notice the speedometer cluster, you have a full digital meter, you have a anti-clockwise tachometer, RPM meter, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है. एंड देन इन द सेंटर यू हैव दिस MID में आप देख सकते हो, यू हैव accumulated info, then you have your drive information, then you have your fuel economy data, and then you can also toggle to other stuff. So you have navigation, turn by turn navigation आपको MID में ही दिख जाएगा, which is very convenient. Then you have tire pressure monitoring system as well. So everything that is shared over here in the speedometer cluster, it is very easy to read, और आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है. I think things are premium, things are good looking, and as per segment standards, this is a top quality interior setup in terms of the driver's point of view. Then to the right hand side of the steering wheel, आपको यहाँ पे एक engine start stop button दिया गया है. Let me show that to you. Check this out. It is very nicely positioned. लेकिन जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हो, आपको वो बटन दिखाई नहीं देता है. Then to the right hand side of that button, you can notice you have the traction control on and off toggle switch. और जब आप ये व्यू बटन प्रेस कर देते हो, आपको प्राइमरी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे ये रिवर्स कैमरा का फीड दिखाई देता है. This will stay on till the time you either deactivate it, or if you again slot back to P, or you just come to a complete halt and pull the handbrake and just stop driving. So that is also going to be useful if you think that is necessary beyond the main rear view mirror. एक और चीज जो आपने नोटिस करनी चाहिए in the new Hyundai i20, that is the pedals. यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको metal finish मिल रही है on the accelerator and brake pedal.
and you can notice there is a very generous dead pedal as well to rest your foot. I have a shoe size 9 and I can completely rest my feet over here comfortably. So this is going to be very useful on those long drives in this all new i20. अभी बात कर लेते हैं इस बड़े टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में. द टच रिस्पॉन्स इज फैंटास्टिक. काफ़ी आसान है इसका इस्तेमाल करना. And you can notice you have Apple CarPlay and Android Auto. Even in bright daylight conditions आपको यहाँ पे ये स्क्रीन जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है उसे देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. And then it is very easy to operate. सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से laid out है. You have these hotkeys over here as well and you can completely turn this off if you think it is not necessary whenever you are out on a drive. Lower down you will notice आपको एक automatic climate control system मिल जाता है. Just check it out how this पैनल ओवर हियर जट्स आउट. इट इज पॉपिंग फॉरवर्ड. यहाँ पे ये जो बटन्स दिए गए हैं ये भी काफी बड़े हैं एंड दे आर वेरी इजी टू ऑपरेट. तो जब आप गाड़ी चला रहे हो आपको आपकी नजरें जो हैं वो हटानी नहीं होंगी. ये जो कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं दीज एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड स्विचेस दे आर ऑल्सो वेरी इजी टू ऑपरेट एंड आई रियली लाइक इट. बटन्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड इट फील्स नाइस एंड टैक्टाइल व्हेन यू आर यूजिंग इट. इसके नीचे आप देख लोगे यू हैव 2 USB पॉइंट्स. वन इज अ फास्ट चार्जिंग पॉइंट और आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे दिया गया है. उसके नीचे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है विद कूलिंग फंक्शन. सो योर फोन इज नॉट गोइंग टू गेट अनकंफर्टेबली हॉट व्हेन यू आर वायरलेसली चार्जिंग इट. एंड ऑल्सो दिस चार्जिंग पैड हैज अ रबराइज्ड फिनिश. So when you keep things over here, when you keep your smartphone over here, it is not going to make any rattling sound and it is going to be kept in place. You can notice it. It has been carved out very nicely, the actual wireless charging spot, and it has kept my phone in place throughout my journey in this new i20. इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो गियर कंसोल दिया गया है द गियर लीवर इज वेरी नाइसली फिनिश्ड. आपको एक ग्लॉस ब्लैक एप्लिक दिया गया है ऑन द गियर लीवर. यू हैव लेदर अपहोल्स्ट्री विद कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग एंड यू हैव द स्टैंडर्ड लेटरिंग and information how you are supposed to slot the gears in this 7-speed dual clutch automatic variant. Then looking at the dashboard section, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो AC vents हैं. Just check it out how seamlessly they integrate with this applique over here, this faceplate of the dashboard, and it runs across the width of the dashboard. इसकी वजह से भी गाड़ी का जो visual appearance है it looks nice and wide. And that is why you will feel that this is a premium car. You will feel that width. It gives you that sense of width. डैशबोर्ड टॉप पे आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एक कार्व आउट सेक्शन मिल जाता है आपको. तो अगर आपको भगवान की मूर्ति रखनी है you don't really have to find the ideal spot. Hyundai has marked it for you. And you can notice it has this nice layered pattern. Check this out. जब मैं डोर जो है वो शट कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ. Check this out how this door panel very nicely mingles with this particular panel of the dashboard. तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको जरूर पसंद आएंगी. सभी चीजें यहाँ पे इन दी i20 ऑल ऑफ दिस इज हार्ड प्लास्टिक. कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है बट एवरीथिंग इज टॉप क्वालिटी. आपको कोई भी दिक्कत उस मामले में नहीं होने वाली है. देन लुक एट द ग्लव बॉक्स. यहाँ पे आपको कूलिंग फंक्शन भी मिल जाता है एंड द ग्लव बॉक्स इज डीप इनफ एंड जनरस इनफ. तो आप काफी सारी चीजें यहाँ पे काफी आसानी से कैरी कर पाओगे. एंड देन लुक एट दिस रेयर व्यू मिरर. One negative is that you do not get electrochromic rear view mirror. It should have been offered especially at this price. आपको manual control मिल जाता है for day night adjustment. Then you have these hotkeys for emergency, for towing services and for Hyundai's BlueLink connected car technology. Up top on the roof console आपको 2 cabin lamps दिए गए हैं. You can turn them off or turn them on the door setting. And this is your single control for the electric sunroof. Right now it is at its first locking position. आप इसे और भी retract कर सकते हो and then one touch to close the sunroof whenever you don't need it. And this curtain over here for the sunroof, this manual blind is something that you have to pull yourself. But when you open the sunroof, it will obviously retract along with the glass section. Talking about finer details, you have an armrest which slides forwards and backwards. Armrest के नीचे आपको storage space भी दी गई है. There is a lot of storage space over here. I have stored a lot inside. Then you have this Oxy Boost air purifier as well. You can switch it off if you don't like it, and whenever you need to clean it, it is very easy to pop open and it is very easy to put it back in place and activate it as well. उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए आपको ये जो सन वाइजर दिए गए हैं. On the passenger side, you have a vanity mirror. There is no cover over here. There is no lamp for the vanity mirror. There is no illumination over here. And on the driver side, you only have a ticket holder. यहाँ पे आपको vanity mirror
नहीं मिलता है। सीट बेल्ट जो है यहाँ पे, चेक दिस आउट, इन दिस i20 you have adjustment, so you can set it to your ideal height and feel comfortable and secure when you're going out on drives. तो सभी चीजें in this Hyundai i20 they are really nicely done. Hyundai nails each and every segment with each and every car that they have to offer with the cabin quality, and the new i20 is no different. सभी चीजें जो आपको इस गाड़ी में मिल रही हैं they are at par as per segment standards, or maybe they just exceed the segment standards. Just look at the door trims right now. Door trim पे भी ये जो सभी चीजें आपको मिल जाती हैं they are very nicely positioned. सभी चीजें ergonomics के डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छी हैं. You have this dark grey finish or maybe gunmetal finish, whatever you would like to call it, for the door handle as well. And there is generous space for a bottle holder as well. There is enough room over there as well. And this car comes with ambient lighting as well, which you can notice on the left hand side door right now. You can notice the optic panel which is going to illuminate that bottle holder section when you are driving the car at night. And you can also notice the Bose branding on the door pad, because this car has that premium sound system and it really sounds good. तो अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो, if you buy the top trims, आपको आफ्टर मार्केट से कोई एडिशनल कंपोनेंट लगाने की जरूरत नहीं है. The sound output is just brilliant. If you want to check out the amplifier, jump to the back seat and let me show that to you. And now check it out, it can be noticed over here. तो सभी चीजें काफी नीटली यहाँ पे टक इन की गई हैं, and all of this shows Hyundai's attention to detail. On the rear seat you can also notice you get ISOFIX, तो आप child seats जो हैं यहाँ पे माउंट कर सकते हो. ISOFIX is also available on both sides of the rear seat, so that is also going to be very useful for you and your family. पीछे आप देख लीजिए, आपको ये retractable handle दिया गया है along with a coat hook as well, and all of these things make the Hyundai i20 a complete package. You also have a cabin lamp for the rear passengers as well, for the rear cabin as well. So I think that this car, the all new Hyundai i20, is offering you all that you need as per hatchback standards. It is a good looking car, it is a spacious car, it has more room than it ever had, and it has more features than it ever had, and it has more features than the segment currently has. तो कमेंट्स में आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको अबाउट द कार, अबाउट दिस न्यू थर्ड जनरेशन Hyundai i20. इस गाड़ी के एक्सटीरियर वीडियो हमने अलग से अपलोड कर रखे हैं. वी हैव अ डिफरेंट ड्राइव वीडियो फॉर दिस कार. सिटी ड्राइव इज सेपरेट, हाईवे ड्राइव इज सेपरेट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 7-speed dual clutch automatic gearbox with the 1-liter turbo petrol engine. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel. If you have any other queries about this new i20, do ask us. We will be more than happy to help you. And always guys, drive safe, always wear your seat belts, say no to road rage, and follow the speed limits.